हाँ स्टार्ट कर। Welcome to DRTSPR. So this is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab. Hello and warm welcome to Dr. Amitabh Banerjee. And it has been not a long hiatus, a minimum gap. We wanted people to understand why we are making shows, that too more predominantly on health rather than politics. Because if you are healthy and healthy minds will ignite so many things. Healthy mind can think in different ways. Healthy mind, by thinking, by igniting their thoughts, can fight for their rights. So health is wealth. That is why DRTSPR channels gives much preference to health. I am a doctor. Sarji is also a doctor. So we know the importance of health. And in that, you should never fall ill. That means prevention is better than cure. So that is how the things were going ahead up till now. Now, vaccines. What has happened to vaccines after COVID-19 vaccines? They have destroyed the faith of the people in prevention. So that is also much better. You don't get exposed to obnoxious elements like food or such type of air, which is going to destroy your oxidation process and digestion. So in such cases, we say natural immunity is the best way, and eat what is cooked, what is grown in your backyard, and you have a balanced diet with vegetables, fruits, and whoever is non-vegetarian, but in a careful way, organized way. What is happening in tuberculosis? We said COVID-19, 99.99% recovery on its own. But still, COVID-19 has gone beyond, and every pharma and every insurance, every media, and every government department, including ICMR, go gaga. And all of a sudden, Modi withdraws from Supreme Court's affidavit stating that it is only voluntary, we never enforced. And Bill Gates, Public Health Foundation of India, why India still behind Bill Gates Public Health Foundation of India? What is he doing? The collateral damage in the form of experimental vaccines, HPVs, we have seen when he was Chief Minister Modi and here Rajshekar Reddy, how Bill Gates invaded. And what happened to that case? The 72nd Joint Parliament Committee report, Mr. Modi and Mr. Rahul Gandhi, why Parliament doesn't discuss. So as if that is not enough, now Bill Gates, I think he has gone dash dash. His forte is software or whatever it is, Microsoft. Why is he wading into these health aspects? What knowledge he has got? He is destroying the spirit of healthy living, not just in America, not in Africa, but India too. But how and why Indian Medical Association is keeping quiet? All those learned doctors, why are they keeping quiet? That is a big tragedy. Now today, we are trying to focus on such melodies, how tuberculosis is also has become chancy infection in everything. 100 years old tuberculosis vaccine, in spite of booster doses, people still, they say whether it is cancer or otherwise, they say they are dying of tuberculosis. But why such a vaccine of 100 years old, if it is not able to immunize, provide such immunity to those who have taken booster doses, then what this gentleman Bill Gates is trying to do at the cost of suffering of the people of India and the world. Sir, please, sir, your. और नमस्ते डॉक्टर रेड्डी, सभी सुनने वाले को नमस्कार। और रेड्डी साहब ने बोला पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, पर हेल्थ इज पॉलिटिक्स एक्चुअली। वो तो हो गया। एक प्रोफेसर विरकॉप थे, 18th सेंचुरी में, उन्होंने कहा था पॉलिटिक्स इज नथिंग बट मेडिसिन ऑन अ लार्ज स्केल। और अभी महामारी के बाद पूरा पता चल रहा है कि मेडिसिन नहीं है, खाली पॉलिटिक्स है। लार्ज स्केल में आप मेडिसिन करते हो, पॉपुलेशन लेवल में गलत पॉलिसीज बनाते हो प्रॉफिट के लिए, तो पॉपुलेशन लेवल मेडिसिन इज नाउ मोर ऑफ पॉलिटिक्स, लेस ऑफ साइंस। इसके बाद अभी जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्यूबरकुलोसिस का, जो बात किया अभी, बीसीजी वैक्सीन का ट्रायल, बहुत बड़ा ट्रायल 1968 में हुआ था। कम्युनिटी ट्रायल 3,66,000 के ऊपर, 3 लाख, 3.5 लाख से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स। और वो ट्रायल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था, 3 ग्रुप में था, एक को प्लेसिबो, एक को एक स्ट्रेन बीसीजी वैक्सीन, दूसरे को दूसरा स्ट्रेन, डैनिश स्ट्रेन था, एक दूसरा स्ट्रेन था। तो ये एक 3.5 लाख पॉपुलेशन को 15 साल फॉलो अप किया था, 15 years जस्ट टू फाइंड द एफिकेसी। एंड ये आप सोचिए 15 साल, इतना लंबा ट्रायल। आजकल कैसे ट्रायल होता है, 1 साल 6 महीना,
कोविड वैक्सीन के बाद से ट्रायल, और अभी फिर से टीबी वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं, जो कि 15 साल में, पता नहीं उनको, जब 15 साल बाद ट्रायल खत्म हुआ, उसमें पता चला कि कोई जीरो इफेक्ट है। एडोलेसेंस एंड एडल्ट्स में कोई इफेक्ट, बचाव नहीं है बीसीजी का। बच्चों में, यंग इन्फेंट्स में 27% प्रोटेक्शन था, 27%, और उसका भी कोई सिग्निफिकेंट नहीं था, उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल इतना वास्ट था, -1 से लेके 50 था, मतलब। तो अभी एक्चुअली बीसीजी का फाइल उसी टाइम क्लोज हो जाना था, पर वो एक बार वैक्सीन चालू हो जाता तो चलता रहता, तो बच्चे लोगों को दे रहे हैं। उसका भी कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं है। कहते हैं कि सीरियस डिजीज बचाता है हॉस्पिटल, आज तक ऐसा कोई डेटा नहीं है स्ट्रॉन्ग। जो भी बात है, अभी क्या है कि 1-2 साल से क्या हुआ कि बीसीजी रीवैक्सीनेशन ट्रायल चल रहा है मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी रीवैक्सीनेशन चाइल्ड ट्रायल गेट्स फाउंडेशन ये कर रहा है, इंडियन साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व है उसमें। साउथ अफ्रीका में चल रहा था ट्रायल। अभी पिछले महीने एक स्टडी रिपोर्ट आया है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। एडोलेसेंस इन साउथ अफ्रीका को फॉलो अप किया, उनको कोई बीसीजी रीवैक्सीनेशन किया एडोलेसेंस को, 16 साल, 17 साल, 18 साल के करीब 1800 एडोलेसेंस, 1800। अभी देखिए 3.5 लाख का ट्रायल हो चुका 15 साल तक। 3.5 लाख के ट्रायल में कुछ नहीं मिला आपको। अभी उन्होंने 1800 एडोलेसेंस को लिया, 900 के एक 900 कुछ लोगों को प्लेसिबो दिया, 900 को बीसीजी वैक्सीन दिया। 30 महीने, 30 महीने, 3 साल से भी कम फॉलोअप किया। देखिए वहां पे 15 साल फॉलोअप किया, 3.5 लाख, कुछ नहीं मिला। अभी क्या, क्या खदान में क्या, कौन सा सोना ढूंढ रहे हैं, अपना ही प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं। और ट्रायल करके पता चला कि वो भी नेगेटिव ट्रायल आया। ट्रायल करके भी दोनों ग्रुप में बराबर इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन क्या होता है कि टीबी बहुत कॉम्प्लेक्स बीमारी है। इन्फेक्शन सभी को हो जाता है, हमारे देश में 35% लोगों को, 100 में से 35 लोगों को टीबी हम बैसिलाई कैरी करते हैं, पर डिजीज नहीं होता टीबी में। इन्फेक्शन डज नॉट मीन डिजीज। 90% लोगों को कुछ नहीं होता है, और जब कहीं जाके इम्यूनिटी कम होता, होस्ट फैक्टर, ओल्ड एज में एचआईवी हो गया, आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, मेल न्यूट्रिशन हो गया, उससे आपका इम्यूनिटी डाउन होने से 10% को 5 to 10% गेट द डिजीज रीएक्टिवेशन। अदरवाइज वो 15 साल, 20 साल तक आपके बॉडी में, 30 साल तक, 40 साल तक टीबी बैसिलई पड़ा रहता है। और 5-10% के लिए ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। पहले कहते थे इसका ट्रीटमेंट लिए इसलिए वैक्सीन बनाएंगे, अरे भाई इसका तो ट्रीटमेंट है, काय का वैक्सीन बनाओगे, और कौन सा वैक्सीन बनाओगे। ये तो बच्चा फेल हो गया आज से, 1968 के एग्जाम में फेल हो गया, 15 साल तक उसको एग्जाम में बिठाया, फेल हो गया। अभी उसको फिर से सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठाया, उसमें भी साउथ अफ्रीका से रिजल्ट आया, उसमें भी फेल हो गया। फिर से अभी आजकल क्या हो रहा है, कॉलेजेस में भी पहले बच्चा मेरिट से पास होता था, आजकल सप्लीमेंट्री में भी पढ़ता है, फिर वो इन्फ्लुएंस लगता, फादर का पैसा लगता है, ये लगता है, पैसा दे के पास कराते हैं। तो अभी क्या है, वैक्सीन भी ऐसा ही पास करा रहे हो, ह्यूमन लाइफ्स इन्वॉल्व है इसमें। और इसमें क्या है कि इंडिया में भी ट्रायल्स चल रहे हैं। इंडिया में करीब 22 स्टेट्स में बीसीजी एडल्ट वैक्सीनेशन ट्रायल चालू कर दिया इन्होंने। और पिछले मार्च में, 30 मार्च का एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई एडिशन में, वहाँ पे 12 वार्ड्स में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने वैक्सीन ट्रायल चालू कर दिया बीसीजी का। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स को बताया नहीं कि वो ट्रायल में है। पार्टिसिपेंट को बताया कि इससे आपको टीबी नहीं होगा, इससे आपका टीबी क्योर हो जाएगा। पार्टिसिपेंट से जब प्रेस वालों ने पूछा, बोला हमको तो मालूम ही नहीं ट्रायल है। फिर जो हेल्थ वर्कर्स से पूछा, फील्ड वर्कर्स से, भाई इनको बोला नहीं, उनको अगर ट्रायल बताएंगे तो वो पार्ट नहीं लेंगे। अगर वो हमको टारगेट दिया है, हमको बोला जैसे भी एनरोल करो। अरे भाई क्या हो रहा है भाई, इन्फॉर्म कंसेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे कर रहा है। ये तो टुस्कगी ट्रायल हुआ था 1932 1972 तक, ब्लैक्स में किया था उन्होंने सिफिलिस ट्रायल, अनपढ़ लोगों में, कई मर गए थे, उनको पेनिसिलिन नहीं दिया, फिर बाद में अपोलॉजी करना पड़ा उनको। और ये हमारे देश में भी ऐसा हो चुका है। एचपीवी वैक्सीन ट्रायल 2009 में हुआ था, ट्राइबल गर्ल्स में, उनको इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया, उनको बताया नहीं ट्रायल है, 7 लड़कियां मर गई, 23,000
के सैंपल साइज में 7 लड़कियां का ट्रायल के दौरान एचपीवी वैक्सीन से डेथ हो गया। बड़ा हल्ला हुआ था उस टाइम, प्रेस हल्ला करता था, 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हुआ था। इतना होने के बाद आज के तारीख में 2025 में वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन ट्रायल चल रहा है मुंबई में। लोगों को मालूम नहीं है कि वो ट्रायल में है। एचपीवी वैक्सीन ट्रायल जैसा हो गया है। ये तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ये हेल्थ राइट्स वायलेशन है। ये आईसीएमआर गेट्स फाउंडेशन फिर से ये कर रहा है। अभी तो डंके की चोट पे कर रहा है क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया वो एचपीवी वैक्सीन ट्रायल पे। अभी फिर एचपीवी वैक्सीन प्रमोट कर रहा है। अभी बीसीजी वैक्सीन भी प्रमोट कर देंगे। अरे 15 साल करेंगे ट्रायल। पहले कर चुके हैं 15 साल, जीरो रिजल्ट आया था। अभी वो 50 लाख पॉपुलेशन में कर रहे, नहीं नहीं री वैक्सीनेशन करेंगे। हो सकता है शायद रीवैक्सीन, अभी कितने बार रीवैक्सीन करोगे? साइड इफेक्ट, अच्छा ये मैं बता दूं, जो साउथ अफ्रीका में जो ट्रायल हुआ था, अभी जो रिजल्ट आया पिछले महीने न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, जो साइड इफेक्ट्स थे वो वैक्सीनेटेड ग्रुप में, बीसीजी वैक्सीन ग्रुप में डबल रेट ऑफ साइड इफेक्ट्स थे कंपेयर टू द प्लेसिबो ग्रुप। फायदा कुछ नहीं, साइड इफेक्ट डबल। 70% पार्टिसिपेंट्स को साइड इफेक्ट हुए, हालांकि माइनर ही हो, स्वेलिंग हो, ये हो, पर वो डबल देन द प्लेसिबो ग्रुप। तो आपको साइड इफेक्ट हो रहे हैं और उसको आप रजिस्टर नहीं करोगे। हमारे देश में लोगों को मालूम नहीं है वैक्सीन ट्रायल में वो पार्ट ले रहे हैं। तो ये तो बहुत ही सीरियस वायलेशन है। एक्चुअली दे शुड बी, somebody शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। अभी तक कोई जवाबदारी नहीं है। एक खाली रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, लगता है आज के तारीख में जो है, उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं है, ना प्रेस का फॉलो अप, ना जर्नलिस्ट का फॉलोअप है, क्योंकि आजकल एवरीथिंग मीडिया इज आल्सो कंट्रोल्ड। तो एसपीवी के टाइम ऐसा नहीं हुआ था, पर अभी 10 साल बाद फिर से उसी हालत में हम आ गए। उसी हालत में आ गए। इसीलिए ये शो से हम ये डिमांड करते हैं कि मोदी हो, अमित शाह हो, या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज, ये लीडर्स, उनके फैमिलीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनके फैमिलीज, जो सपोर्ट करता है मीडिया और आईसीएमआर, उनके फैमिलीज के ऊपर ये ट्रायल होनी चाहिए। क्या बोलते सर? ये गरीबों में हुआ है। ये इट इज गिवन इन द न्यूज रिपोर्ट दैट ऑल द ट्रायल्स पार्टिसिपेंट्स वर पुअर पीपल। दैट्स व्हाट नाउ पुअर पीपल में एटलीस्ट। ट्रायल करना है अनएथिकल है, वल्नरेबल ग्रुप है। इसीलिए ठीक नहीं, है, if Modi and Amit Shah government supported by Nara विदाउट Chandrababu Naidu, Nitish Kumar, Nara Chandrababu Naidu family, Nitish Kumar family, Modi family, Amit Shah, and those administrators, including ICMR, ये ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया जो भी है, ये आईएएस ऑफिसर्स हो, और साथ में उनकी मीडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये सभी के फैमिलीज को पहले जिनके ऊपर ट्रायल्स होनी चाहिए, जो भी ड्रग हो या वैक्सीन। डोंट यू थिंक सर? ओनली देन दे विल अंडरस्टैंड द पेन, because these डेफिनेटली। fellows, और फिर आप, yep, यस, they will इतना बड़ा understand the pain. ट्रायल, Yeah, please बोलिए बोलिए सर। नहीं, इतना बड़ा ट्रायल, जो ट्रायल 15 साल हो चुका है, 3.5 लाख पॉपुलेशन में हो चुका, उसका कोई आप इसका मतलब ट्रायल जब तक करोगे कि एक गलत, बैडली डिजाइन, बैडली रिपोर्टेड ट्रायल करके आप उसका एफिकेसी दिखाओगे और फिर उसको प्रमोट करोगे। हमको तो नियत यही लगता है, क्योंकि जो इतना कुछ एथिकल वायलेशन स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं बिगर कंसेंट का, उसने बोला हमको टारगेट दिया है, वो हमको तो डेटा पे भी हमको विश्वास नहीं होगा अगर बाद में कुछ डेटा भी लाते हैं तो ये हमको। COVID-19, it is right from Pfizer to everything is exposed. Kennedy, their commando, is running after this Bill Gates. Shamelessly, that fellow is again trying to do all this nonsense. अच्छा, अभी खबर है कि गावी का फंडिंग बंद कर दिया है And अमेरिका ने I'm आज। going to show that. I'll show that also. हाँ, I'll show that also. And this is absolutely nonsense. He has become mad, Bill Gates, so that fellow should be crucified as per law only. What he is trying to do? Yeah. First, I'm going to show this 72nd Joint Parliamentary Report. Why Bill Gates has not been arrested, including Public Health Foundation of India officials, including ICMR, those officials who have promoted this HPV vaccine in Girijans, SC/ST. And Rahul Gandhi, you speak so much. During Manmohan Singh, you made this big mistake of trying to privatize the Indian health, public health. Now Modi has come, he has opened all the gates. Because Modi was the chief minister, here Rajshekar Reddy was the chief minister. When these HPV trials were done on innocent Girijan girls, how many of them died? The report is here, Mr. Rajiv Gandhi. I'm going to make him to listen to this.
The 72nd Parliamentary Standing Committee report in India investigated the HPV vaccine trials conducted in Andhra Pradesh and Gujarat. The report highlighted potential human rights violations and ethical breaches in the way the trials were carried out, particularly concerning the vulnerable population of young girls. The committee recommended further investigation by the National Human Rights Commission, NHRC, and the National Commission for Protection of Child Rights. The same thing is happening now in tuberculosis again. Why India is silent? They are doing all this nonsense to divert the attention. And this Bill Gates, don't you think this fellow should be punished? Along with Public Health Foundation of India officials and the government, then in Gujarat, Modi was heading the government. Here, Y.S. Rajshekar Reddy. Congress and BJP both have to answer now. NCPCR. Key findings of the 72nd JPC report. 1. Ethical concerns. The report raised serious concerns about the ethical conduct of the HPV vaccine trials, suggesting a violation of human rights and medical ethics. 2. Vulnerable population. The committee emphasized that the trials involved a vulnerable population, young girls, and that greater caution should have been exercised. 3. Violation of guidelines. The report stated that guidelines and statutory requirements for research on human participants were not adequately followed. And 4. Need for transparency. The committee called for a thorough and expedited report to uncover the truth about the trials and to ensure corrective measures. Background of the HPV vaccine trials. The HPV vaccine trials were conducted in 2009 by PATH, a non-governmental organization, in collaboration with the Indian Council of Medical Research, ICMR, and the state governments of Andhra Pradesh and Gujarat. Approximately 23,000 young girls between the ages of 10 and 14 were administered the Gardasil and Cervarix vaccines. These vaccines were donated by Merck and GlaxoSmithKline. Significance of the report. The 72nd JPC report brought significant attention to the ethical and human rights aspects of clinical trials, particularly those involving vulnerable populations. It emphasized the need for transparency, adherence to guidelines, and accountability in research involving human subjects. The report also highlighted the importance of protecting the rights of children in research settings. This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes. Yeah. Now I'm trying to show you, see, trials and tribulations and expose of HPV vaccine. The 72nd report acknowledges the unethical nature of HPV vaccine demonstration project conducted in the country in 2009 by PATH. But again, the same vaccines, be aware, all those cine artists, you will be penalized. You are promoting HPV vaccine and the government will have to make a say. That is why we said St. Jagdeep Dhankar, the Vice President of India and ex-officio Chairman Rajya Sabha, he resigned because of these unethical practices being indulged by Modi Amit Shah government and silently supported by opposition. He got fed up because Parliament Rajya Sabha, the final report of the committee appointed by the government of India to inquire into the alleged irregularities in conduct of studies using human papilloma. All this is there in the Rajya Sabha domain of the Parliament. How these fellows can keep calm, I don't understand. Just showing this is what is happening, and what is your say, sir? And it's the same thing, the modus operandi. Meanwhile, I'll try to bring the. Yes, sir, please. I'll try to देखिए show. अभी देखिए 23,000 गर्ल्स में 7 डेथ हो गया ट्रायल में। तो अगर एचपीवी वैक्सीन पूरे कंट्री में लाखों में रोल आउट करेंगे तो आप हिसाब लगाएंगे कितने डेथ होंगे। और ये डेथ उस टाइम ट्रायल के दौरान भी स्वीकार नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कोइंसिडेंटल कह रहे थे। तो बाद में जब पॉपुलेशन लेवल में अगर कुछ एडवर्स इवेंट्स होता, हमारा एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग सिस्टम भी कच्चा है। वो उन्हीं लोग करते हैं जो लोग वैक्सीन रिकमेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है।
तो आप सोच सकते हैं एचपीवी का फाइल क्लोज हो जाना था 2013 को, जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये किया था। इन दोनों को, आईसीएमआर को, पाथ को दोषी पाया गया था। और वो गार्डेसिल वैक्सीन था, उसी वैक्सीन का अभी सीरम इंस्टीट्यूट ने उसी वैक्सीन का प्रोटोटाइप बनाया है और गार्डेसिल के साथ ही कंपेयर किया है। साइड इफेक्ट नहीं देखा, बोला कि वो गार्डेसिल जितना ही एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देता है। और वो वल्नरेबल पॉपुलेशन में ट्रायल किया था जिसमें डेथ हो गया था। कहानी वहीं खत्म होना था, क्योंकि ये वैक्सीन भी वल्नरेबल पॉपुलेशन में दिया जाएगा, 9 से 13 साल की लड़कियों को, वो भी वल्नरेबल है। ट्रायल भी वल्नरेबल हुआ था, जब ट्रायल को अनएथिकल पाया गया था। और अभी तक पूरा सेफ्टी का कंसर्न तो हमें होगा, 23,000 में जब 60 डेथ हो गया तो लाखों में कितने डेथ हो सकते हैं। तो इसको तो बहुत ही डेंजरस है, हैजर्डस है। और सिमिलरली बीसीजी वैक्सीन का ट्रायल भी हो चुका था 1968 से 1980 तक, 87 तक या 85 तक, 15 साल। तो उस टाइम भी 15 साल के ट्रायल, 3.5 लाख के पॉपुलेशन में कोई उसका बेनिफिट नहीं पाया गया था। तो बीसीजी का भी फाइल उसी टाइम क्लोज होना था। जो फेल्ड, इसमें हम पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स मनी? क्योंकि वैक्सीनेशन आप करोगे तो 100% पॉपुलेशन को बीसीजी लगाओगे, एचपीवी 100% पॉपुलेशन को लगाओगे, जबकि बीमारी तो बहुत कम को होता है। मैंने कहा टीबी में खाली 10% लोग जो संक्रामित होते हैं, 30% लोग संक्रामित होते हैं, उसमें से खाली 10% को ही टीबी, एंटी टीबी ड्रग्स होने चाहिए ना। वो वैक्सीन तो उसमें प्रॉफिट नहीं है, पर 100% वैक्सीनेशन पूरे पॉपुलेशन को ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इससे तो पता चल रहा है कि इनएफेक्टिव वैक्सीन, और पता भी नहीं चलता टीबी का। टीबी इतना कॉम्प्लेक्स बीमारी है। और टीबी के ड्रग्स जो है, जो एसेंशियल है, पिछले साल 6 महीने तक फर्स्ट लाइन ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स वर नॉट अवेलेबल टू टीबी पेशेंट्स इन इंडिया। ये कितना बड़ा नेग्लिजेंस है, क्योंकि टीबी ड्रग्स नहीं होने से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी इवॉल्व हो जाता है, इमर्ज हो जाता है, और उसको ट्रीट करना बहुत कॉस्टली है, बहुत साइड इफेक्ट्स है। तो मेन चीज़ है, उसमें आप फोकस नहीं कर रहे। कोविड के टाइम आरटीपीसीआर में इतने स्टाफ लगा दिए थे कि 40% टीबी डिटेक्शन कम हो गया था, टीबी डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। और ये सब अभी छोड़ के, पिछले साल टीबी के ड्रग्स नहीं मिल रहे थे 6 महीने, उसको नज़रअंदाज करके आप पूरा पैसा और रिसोर्सेज बीसीजी रीवैक्सीनेशन ट्रायल में लगा रहे हो, जिसका कि पहले प्रूव हो चुका था आपको। तो इसका मतलब, अगर आपका साइंस तब तक आपका मर्जी से 3rd डिग्री करके कैसे भी रिजल्ट लाना है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है, और आजकल तो कुछ भी इतने जल्दी करते हैं, फिर उसमें भी फिल्म स्टार आके डांस करेंगे बीसीजी वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए, और ये फिर प्रोपागेंडा से ये प्रमोट हो जाएगा। मेरे को ऐसा ही फ्यूचर लग रहा है। 260 और children infected with tuberculosis in a Gates Foundation funded vaccine trial. What happened to HPV vaccine funded by Bill Gates, ICMR, governments of Andhra Pradesh and Gujarat? Why they have not been prosecuted till today? The Joint ये Parliamentary Committee report, 72nd Parliament report is already there with you. So we are showing this. I'll just read this, sir. A Gates Foundation funded tuberculosis vaccine trial has resulted in the infection of 260 previously health South African children with mycobacterium tuberculosis, according to a bombshell study published in the New England Journal of Medicine on May 7, 2025. It's shaming. That is why America is trying to go behind Bill Gates. What happened to Modi and Amit Shah? What is the secret understanding? Now, this trial, so many children are infected. And what about the trial in Mumbai and 22 states in India? And why are you doing a trial again on tuberculosis? You have neglected with drugs. Same World Health Organization during COVID-19, it said TB and malaria and typhoid, they were neglected. That is why the uprise. Why Bill Gates is going behind COVID-19 and again tuberculosis? Despite being injected with live Mycobacterium bovis, a bacterium that causes TB in cattle and can infect humans, children in the vaccine group were not protected. In fact, they experienced a higher rate of infection than those who received a saline placebo. That means this fellow has gone mad. Bill Gates Foundation has gone mad because he has been not prosecuted in HPV vaccine trials during that period. That is why he is trying to endanger the precious lives of young generation across the globe now. And India shamelessly again trying to experiment on a vaccine, TB vaccine, which has been which are trials were done on more than 3 lakhs. And they said clearly, now he has given the statistics, even in 5 to 10%, if they are infected, TB drugs are there. Why are you going behind with this vaccine? 90%, like we said, 99.99% COVID-19, tuberculosis is also playing a similar role.
The TB gain of function research. In 2012, the Gates Foundation awarded a $1.6 million grant to a University of Texas tuberculosis research team. 2 years later, research from the same institution published a study describing a genetically engineered mutant of bacteria, Mycobacterium tuberculosis. This mutated protein no longer needed its normal activation signal to turn on. It was always active. This is what he was saying. The paper refers to this directly as gain of function mTRA, that is also phosphorylation competent. Fast forward to 2025 and Gates Foundation money is now backing clinical trials that inject children with live tuberculosis family bacteria under the banner of vaccine development. See how they are trying to crucify. That is why I said Bill Gates family, ICMR family, World Health Organization, their families, and the governments, whoever are promoting those heads and their political parties in support of administrators and their media families should be there for the trials. A bombshell study published, this also I have told you, resulted in infection of 260 previously healthy South African children with Mycobacterium. See, they were healthy. Now you have infected them. Research excluded any infections that occurred in the first 10 weeks of the trial, meaning any infection triggered early by the vaccine itself or already incubating at the time. See, this is already there. Adverse events. The vaccine used was the BCG Danish 1331 strain manufactured by AJ Vaccines. It is still capable of causing disease, especially in immunocompromised individuals. That is why we said Sahaja Roga Nirodhak Shakti, natural immunity individuals will not be affected. To make matters worse, the vaccinated children experience significantly more harm than the placebo group. 82.4% had any injection. See, this is already there in the record. Now I am going to show you another one. Now you see the same pattern. He is the World Health Organization head. Shamelessly still continued after COVID-19. Yeah, with me. Thank you. Thank you for having. Now what he says on vaccination, now you see. Having me. I want to ask you about your own vaccination. You got your first shot when? You know, still I feel like I know where I belong. In a poor country called Ethiopia, in a poor continent called Africa, and wanted to wait until Africa and other countries in other regions, low-income countries, start vaccination. So I was protesting, in other words, because we're failing. Tedros, thank you so much for taking the time to be with me. Thank you. Thank you for having me. I want to ask you about your own vaccination. You got your first shot when? You know, still I feel like I know where I belong. In a poor country called Ethiopia, in a poor continent called Africa, and wanted to wait until Africa and other countries in other regions, low-income countries, start vaccination. So I was protesting, in other words, because we're failing. Tedros. See, when you are head of the World Health Organization facing the deadliest pandemic in decades, have billions of vaccines stockpiled and still haven't taken the time to protect yourself and others, this is what is all about Mr. Tedros and Bill Gates drama. Now I'll show you the latest from America. Here it is. RKF Jr. just took a major shot at Bill Gates' vaccine empire, cutting US funding to his vaccine group, Gavi. They have understood. Now listen to him. Because I've written a book about him, and that what he calls philanthrocapitalism, which is you use philanthropy to make yourself rich, and you use it strategically, and that's what he's done again and again. He's gotten control of the World Health Organization so that they mandate vaccines all over the world, and the companies that make those vaccines, Gates is, in many of them, the major shareholder. He did the same thing with the Green Revolution, got a hold of the regulatory agencies in African countries and forced them to change the nature of agriculture. And there's 20,000 generations of agriculture of crops like sorghum and plantains and yucca and all these plants for subsistence. And I know most about Gates, because I've written a book about him, and that what he calls philanthrocapitalism, which is you
I just wanted to make this as a headline. And so Use philanthropy to make, he said, no, we're going to transfer them all to these, GMO monoculture. right. Now, see how this fellow is going ahead. Congress, I'm going to encourage them to stay involved in global health, saving millions of children's lives with a small part of the budget. When you ask people how much the foreign aid budget is, they often will say 5 or 10%. It's less than 1%. Even so, what we do give, it adds up to a lot. You save tens of millions of lives. Unfortunately, early this year, most of the people involved with that were through USAID were all let go, and the money was largely cut off, resulting in a lot of people dying. A small part of it's been restored, but not enough to avoid mothers giving HIV to their babies, people not being diagnosed with tuberculosis, kids not getting bed nets to protect them. We're trying to make sure that the money that Congress said should be spent on these things, that actually gets spent. I'd argue that the 1% is worthwhile, not just on moral grounds, but very practical grounds of keeping America strong and protecting us from diseases, helping people. Now you see what he is talking shamelessly and how this exposure and then massive medical scam that is dotting India. See what has happened in South Africa. This is a bombshell report. Now he talks about tuberculosis in South Africa, but this is a bombshell report wherein the children, a bombshell study published on May 7, 2025 confirmed that a Gates Foundation funded tuberculosis vaccine trial resulted in the infection of 260 previously healthy South African children with mycobacterium tuberculosis. With the same thing, he is going to US Congress as Kennedy has cut funding to his Gavi Foundation, and how he is trying to mastermind. And this 77 report is also why he has not been prosecuted along with ICMR and the governments of Andhra Pradesh and Gujarat. Because he has not been prosecuted, is he going scot-free? Sir, I hope I have shown everything. Now your final comments. इसमें एक करेक्शन है रेड्डी साहब, ये इन लोग भी थोड़ा ओवर चले जाते हैं। मैंने ये पेपर पढ़ा है May 7, 2025 का न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 260 को इन्फेक्शन नहीं हुआ वैक्सीन ग्रुप में। एक्चुअली दोनों ग्रुप में बराबर इन्फेक्शन हुआ। 66 900 ये थे पार्टिसिपेंट्स दोनों ग्रुप में, और एक में 62 हुआ होगा वैक्सीनेटेड में, एक में 59 हुआ था अनवैक्सीनेटेड। तो बट एक चीज है जो हाँ, साइड इफेक्ट जो है वो डबल हुआ है, वो पेपर में है। साइड इफेक्ट डबल हुआ है, बेनिफिट जीरो हुआ है। बेनिफिट that is important. We say हाँ, if the vaccine is given, इसलिए हम इसको जो है कि दोनों if साइड it can prevent tuberculosis, we will welcome it. What is there? It should be a scientific trial. तो ये भी थोड़ा सेंसेशन कर देते हैं, तो उसमें भी हमारा क्रेडिबिलिटी चला जाता। हम पूरा चेक करते हैं, हमने ओरिजिनल पेपर को चेक किया है, 260 फिगर हमको कहीं नहीं मिला है। तो ये 60 में हुआ है, वो 260 पता नहीं कैसे हो गया, वो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट करते हैं, वो करना नहीं चाहिए। अगर साइंटिफिकली हमको हमारा भी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना चाहिए। 100%, sir. We want only truth to prevail because it is health. We are saying 72nd Joint Parliamentary Report on HPV वो vaccine. करेक्शन है, पर ये तो आज ये तक प्रोसिक्यूट नहीं किया, इसीलिए फिर इन्हों जाके ये कर रहा है साउथ ये अफ्रीका। ये क्या है कि बट दिस इज वेरी सर्टेन कि देयर वाज जीरो बेनिफिट एंड देयर वाज डबल द साइड इफेक्ट। एचपीवी सबसे जीता जागता है जहाँ पे 7 डेथ्स हो गए ना 23,000 में, उसमें तो डेथ इज फाइनल उसमें, और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं किया उन्होंने, जल्दी से वो कर दिया बेरियल। पोस्टमार्टम करने से पता चलता, वो भी नहीं करके बोलते कोइंसिडेंटल डेथ है। दे ट्राई टू कवर इट अप, दैट इज ऑल्सो अ बिगर क्राइम। तो ये इसीलिए हमको फिक्र है कि इसमें भी टीबी में इंडिया में तो, और वहाँ पे मॉनिटरिंग सर्वेलेंस हमारा बहुत पुअर है। साउथ अफ्रीका में फिर भी वो पता चला। हमारे यहाँ जब आपने गलत तरीके से एनरोलमेंट किया पार्टिसिपेंट्स को, उनको मिस इन्फॉर्मेशन किया, उनको आपने बताया नहीं ट्रायल है, और गरीब लोगों को लिया, तो फिर डेटा का हमको इंटेग्रिटी भी क्वेश्चन मार्क हमको लगता है। क्योंकि फील्ड वर्कर्स खुद बोल रहे हैं कि हमको ऊपर से प्रेशर है एनरोल करना, जैसे भी टारगेट आपको टारगेट दिया है। ये तो संजय गांधी इमरजेंसी के टाइम का टारगेट याद आ गया हमको, नसबंदी का टारगेट। अभी नसबंदी का टारगेट है, अभी आप पकड़ पकड़ के वैक्सीनेशन का भी टारगेट बना रहे हो विदाउट इन्फॉर्मिंग देम।
मतलब वही हो गया ना, इमरजेंसी लग गई हमको, हेल्थ इमरजेंसी, ये पॉलिटिक्स है। आप कह रहे हैं हेल्थ इज पॉलिटिक्स, नहीं है। अरे आप, ये पॉलिटिक्स है बिल्कुल। हेल्थ नहीं इज नहीं, बिकम मैं द, ये दोहरा रहा था कि आपको हेल्थ रहने से समझ में आएगा हाँ क्या हाँ, पॉलिटिक्स, हेल्थ इज, राजनीति क्या हेल्थ होगी, इज आपको बिकम समझ में द, आएगा। वो बात कर रहा था मैं। health has become the biggest political इंस्ट्रूमेंट नाउ। हेल्थ के नाम से पूरा पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स होता है। साइंस और ट्रू साइंटिस्ट को दबा दिया जाता है, और जो पॉलिटिशियन होता है अमंग दी हेल्थ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट कम रहता है, वो पॉलिटिशियन ज़्यादा होता है। वो जाके अपर इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में चला जाता है, और इसीलिए और हमारे को गलत दिशा में ले जाते हैं। गलत दिशा में ले जाते हैं। ये हमारी स्वास्थ्य की मामला है। एचपीवी की जो ट्रायल हुई थी, कितने लोग मरे आंध्र प्रदेश और गुजरात में, और क्यों किया गया ऐसे ट्रायल बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलके। भारत सरकार जो भी है, गुजरात और आंध्र प्रदेश की सरकारें और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और वो पाथ जो भी था पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा, और एक पाथ बोल के ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऊपर आज तक क्यों केस एफआईआर नहीं हुआ और ट्रायल क्यों नहीं हुआ? वाई देर वॉज नो ट्रायल इन 1972 JPC report very clearly exposed HPV trials by Bill Gates Foundation, governments of Gujarat and Andhra Pradesh, including Indian Council of Medical Research. Because you have not prosecuted them, now Bill Gates is going ahead again with the so-called tuberculosis in Africa. How they have got infected with zero benefits. And already more than 3 lakhs trial was done, the TB vaccine trial. Still, the report is still there. They clearly stated 90% nothing will happen. In only 5 to 10% immunocompromised. For that, drugs were also there. Then why this retrial? Retrial, why? This is what clearly Kennedy said. He said, in the name of philanthropy, he is looting, and he is trying, in that disguise, he is making money. Bill Gates is making money. This is what Kennedy clearly stated. Robert F. Kennedy, the US Secretary of Health and Human Services, he clearly stated, he has written in that book how Bill Gates is trying to destroy the health of the world. That is why United States of America has cut down funding for Gavi. That is why he is running around Congress for that 1%. Why should he run around? He should be run arounding for improving technology by from hacking Microsoft and all. But what interest he has got in health? That means he is making more profits in these vaccines by create funding, by create fear, have media on your side, have those governments, political parties funding them, have them on your side, and loot them. Create a fear, lockdown, and see that everyone is vaccinated against science. And this is nothing but human rights violations totally. So Indian government now should inquire that report and start prosecutions in 72nd Joint Parliamentary Committee report, as well as the latest tuberculosis episode, when there is none. People are suffering with more others, as he rightly said, accidents, malnutrition. Those are the fundamental aspects. Then come TB, dengue, malaria, but they are ignoring everything. Thank you very much, sir. Anyone can Thank you. participate. You can differ with us. My number is 9440465339. You are most welcome. Do support DRTSPR channels. They are all in larger public interest only. Thank you, sir. Thank you.